So, hello guys, and I hope everything is visible to you. And let us start with the problems of today. Just let me open my OneNote so that I can basically tell you about all the problems of today's. So I hope the contest would have gone well for you. And let us begin. I hope. Okay, so the OneNote is been visible to you all. Just tell me no because I cannot see. The OneNote is been visible to you all. Hello. Ah, that's cool. So now let me begin with the problems. Uh, Correct. yeah. So the first problem is better deal, and this is a pretty easy problem. So I won't waste much of time here. In this question, it is given that basically chef one or the person one, he sells the amount at 100, and the person two, he sells the amount at 200, but he also gives a discount of assume X%, and it also gives the amount of Y%. So from whom you would buy the product, like from whom you must buy the product? Obviously you will buy from that person whose rate is cheaper, obviously. So if we calculate, then 100%, if we have 100 and we discount X, then the answer would be definitely 100 minus X. This is a very common thing because we will just subtract X from it, and we will basically 100 minus 100 minus X, and we will take the percentage. So it is X by 100 into 100, which is X. So the answer would be 100 minus X. Similarly, as 200 is equal to 2 into 100, so the answer would be 2 into that number, because it is very simple that 200 is 2 times of 100. So the X would be 2X. So we will basically take the discount as 200 minus 2 into given discount. And if they are same, then we'll print both. And if any of them will greater, then we will print the greater part of it. So I'm really sorry about it. So see the code here. Is the code visible to you all? I have taken ans1 equal to 100, ans2 is equal to 200, and ans3 as 2 into k. And I have taken, just for zero iteration, I have taken max of this and zero. And if cost 1 is less than cost 2, then first, cost 1 greater than cost 2, then second, else we can print both. I hope it is clear to you all. Uh, just say a yes by opening your mics. I will understand. Now let us move to the second problem. Basically, it is saying that there is an even integer. Uh, there is an even integer, and there is a permutation from 1 to n. Permutation means all the numbers are occurring from 1 to n. Uh, Something like this. And we have to print a permutation such that uh, pi and pn plus I would would be having just would be distinct. Means assume this is pi, assume this is pn minus I plus 1, and if we add them, then it is distinct. So think that you are printing the permutation in this order, then the answer of this and this would be 11.
The answer of this and this would be 11. So this can't be the case. So how to print? We have to print the sum would be increasing. And if we have to do that, then basically we have to take 1 and 2. We will take 1 and 2 and keep it at separate places. We have kept 1, we have kept 2 here. So the sum is 3. And this can't repeat in the entire set because 3 plus 4 would be 7, 5 plus 6 would be 11. So this can't repeat. This will only increase 15 and it would go like this. So we will basically take 3 and 4 and we will store it like this. Then we'll take 5 and 6. We'll store like this. जस्ट आप सम को इंक्रीज करते करते जाइए. इसका और इसका सम जो है वो बस इंक्रीज होना चाहिए. दिस इज अ जनरल इंट्यूशन. लाइक we don't have a how to this question. This is the intuition and it is a brute force. So basically now what you have to do, now you can see that आपके जितने भी odd number है from 1 to n, they are appearing in increasing order. And जितने भी even number है, all the even numbers, they are appearing in decreasing order. Thus you can take a vector, you can print all the odd inside it, you can print and you can print it them like this. Then you can take a vector, you can take all the even inside it, you can just reverse them and you can print. Now basically let me show you the code. I have taken a odd, I have taken a even, and I have pushed back all the odd, I have pushed back all the even. Then I have just sorted all the even. No need to sort it, but yes, you can sort them. And this is the this is diff 3-second problem. So you can just sort all of them, though no need of sorting, and you can just reverse all of them. And I have basically merged it, no need of merging them. And you can print the way as I have said. Just print them in increasing order, all the odd in increasing order and even in decreasing order. I hope you understand. Just write a yes so that I can be assured that you all are understanding. Yeah, that's cool. Now let us move to the third problem. Smallest prime factor. This is a very good problem. Uh, so basically it is telling the Seth has a current store X. In each second, he can add a smallest prime number of his score and add to his score. Determine the minimum number of seconds after which the score becomes greater than Y. So think now there are two cases. If a now, let me just put a line here. If a number is there, okay. If a number is there, either it can be even or odd. We, we have to agree this fact that a number will be even or the number will be odd. Rather than this, it can't be anything. If it is even, then you have to add 2 with it. Because the smallest factor would be 2. Even plus 2 will be also even. I hope you get the point. Even plus 2 will be also even. So you have to add number plus 2. And the smallest prime factor of this will be 2 plus 2 plus 2 till you reach your goal. So what would be your answer? Your answer would be goal minus the number by 2, and you have to take the seal value of it. Seal value because one increase step you have to do if you can't reach the number, and you have to go greater than equal to the goal. Then you have to take the seal value of it. Okay, but what happens if the number is odd?
To be precise, an odd number will always have a odd prime factor. This is a guarantee that an odd number will always have a odd prime number. So thus, if we add odd to the smallest prime number, smallest prime factor, thus it will be even. Okay. And now we have to check if odd plus smallest prime factor, if it is greater than equal to x or the goal, it means we have reached our target. And if we have reached our target, then we have to print what? 1, because in only one step we have reached. And if we haven't reached our target, then it is very simple. From now on, the smallest prime factor would be 2 because the number is already even. Thus, the smallest prime factor would be 2 here. And if it is 2, then what would be the answer? Number minus, uh, sorry, you just let it as goal. It would be goal minus number plus smallest prime factor by 2 is a seal plus 1. Why plus 1? Because we have added the smallest prime. We have added an odd prime number. Thus, for this, we have to make a plus 1. So I am just showing the code for more clarity. See, here it is like it ans1 is equal to seal div k minus n 2, and basically I have checked if it is even, then I have printed the seal div of k minus n and 2, and if it is not even, means odd, then I have taken an index in which I have taken the helper of I, and int ans is equal to n plus index. N plus index matlab the small num plus smallest one, this part. Okay. So after taking, just a minute. Yes. After taking this part, I have checked, can we reach our answer? If we can reach our answer, then the answer would be just 1, because I have shown why the answer would be 1 in this step. And if we cannot do that, then we will just definitely take the CLD of k minus ans1. Ans1 is n plus index, as you can see, and uh, we can print ans2 plus 1, because I have shown that we have also added an odd prime here, so one more extra step is required. I hope this question is understandable to all. Just tell a yes or no, or you can also tell me in chats also. It's your wish. Hello. Yeah. Okay, that's cool. Now let me move to the next part, distinct opposites. I think we have done this. Now one or two stones. Now this is a good problem. Now basically, let me start. Now basically there are two piles of stone. Pile 1, pile 2, and we have to remove the stone simultaneously, one by one. And the chef can remove either
-1 from here or -2 from here, and Shafina, the female character here, can move -1. Just a minute. -1 from here or -2 from here. So basically, we have to check that who will win if they play optimally. So assume that there are two stones. So the chef will remove all the two stones. So Shefina will win. This is the direct approach, no? कि अगर दो ही स्टोन है तो शेफिना जीत जाएगी क्योंकि इसने दो स्टोन रिमूव कर दिए। ठीक है। अब बेसिकली ऐसा सोचो कि हमारा पाइल वन में से और पाइल टू को हम ले रहे हैं और पाइल वन में स्टोन ज्यादा है। ठीक है। आपके पास पाइल वन में स्टोन ज्यादा है देन पाइल टू। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर इसका और इसका डिफरेंस लाइक एज्यूम यहाँ पे एक्स स्टोन है, यहाँ पे वाई स्टोन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तब तो आप शेफ को ही ले सकते हो ना, क्योंकि शेफ अपने दो दो स्टोन रिमूव कर देगा, उसमें ये अपना रिमूव करती रहेगी और इसके पास एट लास्ट आके दो स्टोन बच जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंस अगर 2 हुआ देन ऑब्वियसली इसके पास दो स्टोन बच जाएगा। एज अ रिजल्ट शेफ जीत जाएगा। ठीक है। बट अगर डिफरेंस 2 ना होके डिफरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ और हुआ, ठीक है, डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ और हो गया, देन हमको चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। अगर इवन, अगर ये ऑड है, ये वाली पार्ट ऑड है, देन ये दोनों सोचिए इस पॉइंट पे इक्वल हो गए। ये एक पॉइंट, ये दो दो स्टोन रिमूव किया एंड ये रिमूव करते गया, बट लास्ट में इसके पास तो और स्टोन नहीं बचेगा ना शेफ के पास, क्योंकि ये रिमूव करता गया करता गया करता गया इस पॉइंट पे उसके पास और दो तो स्टोन बचेगा ही नहीं, एक स्टोन बच जाएगा। बट ये अपना रिमूव करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। सो बेसिकली अगर डिफरेंस कुछ भी हुआ, ग्रेटर देन कुछ भी हुआ, और अगर वो ऑड है, ठीक है, ऑड इन द सेंस ये वाला पोर्शन ऑड है, तो इसमें हमेशा शेफ जीतेगा। मैंने रीजन भी बता दिया है आपको, क्यों? क्योंकि आप यहाँ से पाइल ऑफ स्टोन रिमूव कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो एंड आखिर में आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे एक बच जाएगा, इस पोर्शन पे एक बच जाएगा, बट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो ऑब्वियसली शेफ जीतेगा। बट अगर इसका उल्टा हो गया, ये y ग्रेटर देन x है एंड यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऑफ स्टोन है, देन जस्ट इसका उल्टा होगा। जस्ट इसका उल्टा, आपके पास ऐसा स्टोन है, ये आपका मतलब खत्म होता रहेगा, और ऐसा आपके पास है, ये आपके पास खत्म होता रहेगा, अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा। लाइक ऐसा सोचिए, इसका जस्ट उल्टा सिनेरियो, द ऑपोजिट सिनेरियो ऑफ दिस। ठीक है। सो मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि अगर एक्स आपका 2 है, वाई आपका 2 है, देन कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका एक्स वाई से बड़ा है और उनके बीच जो डिफरेंस है वो 2 के अंदर है, 2 के अंदर मतलब ये वाला स्टेप, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जस्ट ये पी और क्यू मतलब सेफ और शफीना और सेफ, तो बेसिकली आप रिटर्न कर सकते हो पी। वरना आप वरना आप ये वाला सिनेरियो, मैंने पहले वाला सिनेरियो बताया, पहले इल्सफ वाला पहले वाला सिनेरियो बताया, और लास्ट वाला जो एल्स है वो मैंने आपको दूसरा वाला सिनेरियो बताया। ठीक है। जस्ट इसका उल्टा आप सोचिए ना, एक पाइल रखा है उसका जस्ट उल्टा आप कर दीजिए, दैट वुड बी द आंसर। आई होप एवरीवन, सबको समझ आ रहा है? जस्ट राइट अ यस इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन द चैट। देन मैं आपको सबसे ये वाली
बढ़िया वाली प्रॉब्लम समझाऊंगा, सी वाली, ई वाली। ई वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम आई से। ई एक बहुत ही मस्त मतलब प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली उसने बोला है कि आपको कोई भी नंबर फाइंड करना है एन, सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस क्यूब रूट ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाए। और यहाँ पे एक्स गिवन है, आपको एन फाइंड करनी है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में ना दिक्कत ये है कि हर कोई बाइनरी सर्च लगाने लग गया। आपको एक आंसर है, आप कोई एक फंक्शन बना दिया एफ करके और आप उसमें सब कुछ लिख दिए, आपका जो भी है क्यूब रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ एन, फिर आप बाइनरी सर्च कर दिए। बाइनरी सर्च करने के बाद आप सोच रहे कि आपका आंसर आ जाएगा, बट नहीं, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च जो होता है ना, वो मोनोटोनिक फंक्शन के लिए लगता है, क्योंकि या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो। इन दोनों में आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। बट इसका सीन कुछ अलग है। आप थ्री समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। मैंने भी इससे पहले बाइनरी सर्च लगाई थी इसमें। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड। शायद है नहीं, बट हाँ बाइनरी सर्च मैंने लगाया था। बट अगर आप इसको थ्री के लिए देखेंगे ना, वन से थाउजेंड तक, आप बाइनरी सर्च लगा लो, आपको जैसा करना है करो, आंसर 36 आएगा, बट द आंसर वुड बी 25। क्यों? पता है, ये मोनोटोनिक है ही नहीं। ये ऐसे जा रही है, फिर थोड़ा सा ऐसे खिसक रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा सा, फिर ऐसे, मतलब ये पार्शियली मोनोटोनिक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मोनोटोनिक है, बट ये कंप्लीटली मोनोटोनिक नहीं है। ये कंप्लीटली मोनोटोनिक है ही नहीं, इसलिए आप इस पे बाइनरी सर्च लगा नहीं सकते। अगर लगाएंगे, इफ यू अलाउ बाइनरी सर्च, देन आपको पार्टली लगाना पड़ेगा। मतलब आपको एक एक पार्ट कर करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक एक पार्ट खरीदना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देन आपको इन तीनों पे बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा। नाउ जस्ट लेट मी शो यू कि बाइनरी सर्च मैंने कहाँ लगाया था और वो कहाँ वर्क नहीं किया था। लेट मी, ये सबमिशन कहाँ पे दिखता है? अकाउंट, हाँ। सो देखो, मैंने भी खुद यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाया था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरा खुद का रॉन्ग आया, बिकॉज मैं आपको ये कोड भी दिखा सकता हूँ कि क्यों रॉन्ग आया। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये तो सही दे दे रहा है, बट इसको मैं अगर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट चेंज कर दूँ ना, सी, ये थ्री का 36 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च सही से काम नहीं करेगा। दिस इज आवर फर्स्ट थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू सी, देन काम क्या करेगा।
काम क्या करेगा? दिस इज द मैथ्स क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है। सो नाउ बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको बेसिकली एक क्यूब रूट, देखिए अब जो अपना आंसर आएगा ना, दैट वुड हैव टू ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे होगा स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर आप क्यूब रूट लेंगे ना, इसका क्यूब रूट लेंगे और अगर आप एक बढ़ाओगे तो वो ऐसा हो सकता है वो क्यूब रूट घट जाए, बढ़ने के बजाय घट जाए। क्योंकि आप 29 के लिए देखिए, 29 के लिए स्क्वायर रूट होगा कितना? 5 - 3। बट 25 के लिए होगा 5 - 2। इसका आंसर 2, इसका आंसर 3। ठीक है। सो यहाँ पे ये काम करेगा ही नहीं। सो हम लोग को बस इसको बेसिक मैथ से संभाल लेना है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, एक फाइंड फंक्शन लेना है। ठीक है। और ऐसा करना है, मिड कर देना है उसका, मिड आप मिड ले लो। ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप बाइनरी सर्च कर रहे हो, आप बस फाइंड कर रहे हो, आप बस फाइंड कर रहे हो कि कौन से पोर्शन में मेरा इसका क्यूब रूट लाई करेगा। तो आप बस एक, मैंने एक फाइंड फंक्शन लिया है जिसमें मैंने फाइंड किया है कि कौन से फंक्शन में इसका क्यूब रूट लाई करेगा। कौन से पार्ट में इसका क्यूब रूट लाई करेगा? जस्ट 2 मिनट्स, लेट मी थोड़ा सा, हाँ, इस कौन से पार्ट में क्यूब रूट लाई करेगा। ठीक है। अब जिस पार्ट में आपका क्यूब रूट लाई कर रहा है, लाइक सोच लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्यूब रूट लाई कर रहा है, आपका जो आंसर होगा ना वो इस क्यूब रूट से इसके नेक्स्ट वाले स्क्वायर रूट के अंदर के बीच ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्यूब, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आप देख लिए कि भाई इतने से इतना तक इसका क्यूब रूट है। फिर आपको बेसिकली इस फंक्शन से देखना है कि n माइनस फाइंड n इंटू n, मतलब n माइनस क्यूब रूट ऑफ n इंटू n, ये वाला वैल्यू कहाँ पर है? ये वाला वैल्यू जहां पे होगा वही आपका आंसर होगा। क्यों क्यों मैंने, आप मैथ्स के अकॉर्डिंग, ये मैथ्स का ही करना ना, आप बस इस सेगमेंट में ये वाला पार्ट फाइंड कर लो, आप ये वाले पार्ट में ऑटोमेटिक जंप कर ही लोगे। ठीक है। तो मैंने भी बेसिकली वही किया है, मैंने यही वाला पार्ट ही बस फाइंड किया है। नहीं, लेट मी शो यू द कोड। हाँ, मैंने यही वाला पार्ट ही बस फाइंड किया है, उसके बाद आप ब्रूट फोर्स कर करके फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आंसर को, जो आपकी आंसर आ रही है, अ, जो आपकी आंसर आ रही है उसको आप कंटिन्यूअसली ऐड करते जाओ टिल एन। जो आपकी आंसर आ रही है आप उसको कंटिन्यूअसली ऐड करते जाओ टिल एन, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ, बट हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी था। यू कैन डू इट। So let me just stop the recording now. I hope you understand.